In this video, I'm going to show you how you can create any pillow in 3D Max. So first take a plane, size कोई भी ले सकते हो, and then box, length, width and height. तो इसकी मैं जो length ले रही हूँ that's a 40, width 60 and then height 0.1. And segments I'm using like a 20 and then 30. Okay, so next go to the modify and then take a cloth. तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ओके लेट्स वैसा ही करना एंड देन इसको बड़ा करते हैं एंड क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो भी अपना बॉक्स है, क्योंकि उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करना है, राइट. एंड देन प्रेशर आई एम यूजिंग अ 4. ठीक, नाउ ऐड ऑब्जेक्ट एंड देन सिलेक्ट प्लेन, जो अब जहाँ पे अपना पिल्लो जाके टच करेगा. ठीक है, सिलेक्ट हम प्लेन होना चाहिए, बी श्योर एंड देन कि अपना वो एक हार्ड पीस बने. ठीक, क्लिक ओके एंड देन लेट्स ट्राई. यू कैन सी आवर पिलो. Let's take a realistic effect. Go to the modify again. First click on load again. Now go to the modify and then search noise. See, normally I'm using a roughness like a 1. According to your scene you can change it. It's not कि आपको 1 ही रखना है. ठीक है, स्ट्रेच मैं 0.5 पे लेट्स चेक कि अगर सही हो रहा है देन इट्स इनफ. ओके फाइन, नाउ यू कैन सी, नाउ इट्स लुक रियलिस्टिक पिल्लो. You can change the color. So if you want more videos on 3D Max, please comment.